Hey guys, good morning. A warm welcome to one and all. So, who are part of our chat today. As you know, we are bound to discuss our SQL practice questions today. So, as you remember, in our previous lectures, we have been covering a lot of things towards the content of my SQL theories, right? So, we have covered a lot of functions there. We discussed about DDLs, DMLs, and DCL, TCLs, right? Select statement, where, group by, having. So, I believe people do not have any questions there. We did a quick recap yesterday also, if people were there with me, right? On top of that, considering the fact that we have covered almost all the required theories for our practice session on SQL, right? So I believe people are very comfortable with the theoretical part. Again, if anybody has any questions, right, regarding your theoretical part, whatever functions we have covered so far on SQL, please do feel free to put up your question in the chat. Hello, Suraj. Thank you for joining in. So I'm monitoring the chat, guys. Okay, so please do feel free to put up your questions if you have anything, any doubts from anywhere, right? So we're gonna take that. Today we're gonna be doing the exercise questions, okay? And as expected, I was asking you to have a MySQL workbench setup done on your own system, right? So you can practice along with me as well. Okay, so we're gonna be doing a lot of questions there. But again, guys, any questions, do feel free to put up in the chat. I'm trying to monitor it to the best I can, right? So we can take it as it comes. But again, do feel free to interact, guys. So it's purely today is gonna be the SQL practice questions. We're gonna be solving questions on MySQL Workbench, right? If not, please again utilize this time to have the setup done on your own system. Okay, so that's the basic requirement. But again, if you're still not able to do it, do not worry. You can still follow up the session. So I'll be solving it live for you. So I hope you'll be able to understand. If you're still not, please put up the question in the chat. We'll take it as it comes. Okay. Hello, Krishna Kumar. Thank you so much for joining in. I hope you're doing well. Yeah, Suraj, no problem. We'll be doing the subqueries today, so do not worry. We have a 2 hours of session today. The first is at 10 to 11, so let's see how many questions we can do, right? And eventually we have another session coming at after 15 minutes of break, so we'll start at 11:15 again, right? We'll try to solve the as many questions as we can. Again, if you're not able to understand the subqueries or the joins, then maybe I'm not doing the good job, right? So do not worry about that. I'll make sure that you understand it by end of today's session. Okay, even though if you're not able to understand, Suraj, do feel free to put up your question. So we'll solve it as many times. Okay, but the importance is everybody in the classroom should understand what we are expected to do. Okay, so I'm not here to finish the course. I'm here to make you learn. Hey Parth, thank you so much for joining in. Good morning. Cool. Let's quickly start, guys. So meanwhile, people will join in. What is the source of our question? Source, I mean, again, so here I'm trying to use it, the base coding, the base database which we have from MySQL Workbench, the default one, Sakila, right? So I'm going to use that as our basics, and the questions I've tried to club it from Google as well, and as well as my own understanding. So I'll try to solve it to the best I can. Okay, I'll try to give you the way of thinking of those questions. Okay, like if you're comfortable with those questions, then we can try to solve the competitive questions as well again. But at least the basics should be clear before jumping into the advanced questions, right? So that's my objective. Cool. Great. So let's start, guys. So today we are in our L6, the lesson 6 for our SQL masterclass. So we are into SQL practice questions. That's what the agenda for today. Right, so a quick introduction about myself. As you know, my name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I've been into multiple industries. I have almost 9 years of industry experience. With this, I was into, uh, multiple places. So I was into a cloud domain, I was into a bank, I was into automobile sector, and I'm in right now in telecommunications. So multiple domains, guys. So that's the beauty of being into data science. And trust me, Python and SQL, they both are equally important. So they both are the mandatory skill sets for you to become a data scientist. That's why we have started with Python and SQL both. So we are running this parallelly, right? So Python already we started a month and a half back. SQL we started last weekend. So we are into our sixth lecture today. So anybody has any questions, do feel free to tell me that. Again, I'm a motivational speaker as well. So any questions regarding your career,
If you're stuck anywhere, do feel free to let me know. So we'll do that. Okay. So in the subjects, as discussed, so Python, PySpark, and SQL is our agenda. We started with Python and SQL already, so we are running it parallelly. And PySpark is in the plan. So once we have finished with any of these topics, right? So we're going to start with PySpark. That's a big data component where the distributed competition comes in, right? So we'll do that. Part, do not worry. So I'm not sure there would be some issues in your workbench setup. So I mean, it's okay. It's fine. No problem. So we'll still be doing that. But generally, if you set up a local DB instance on your own system, right, and on Workbench, it should give you the Sequela database by default. But it's okay. Do not worry about that. Cool. So again, guys, you have this Python 10 code right in front of your screen. Okay, so you can see this Python 10. If you use this Python 10 code, you're gonna get a free Relevel sample test paper. Okay. So I hope with the past lectures, you know what is a Relevel platform, right? A test hiring platform from Unacademy. So you're gonna get a free Relevel sample test paper, guys. So please utilize this. Use this code Python 10 before attempting to Relevel testing program. It's completely free. So when you're going to do that, you can use this code to get a free sample test before you actually attempt the real assessment, right? So please do that, guys. Okay, so as per the things, we have to go to this mandatory promotion, guys. Please bear with me. So I'm going to run it through quickly. So you know this Relevel is the new platform launched by Unacademy, right? So it's more of a test hiring platform, and there are multiple reasons why this has been launched. So you know that many a times candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. There could be ones like, you know, they don't have the right degree. Right degree, I mean, having the degree from a top-notch universities, or maybe not having the poor network, not having the good network, right? So maybe they don't know the right people. So potentially one of the reasons they lose out on the good opportunities. And also they apply for some jobs and the resume is not standing out, right? Because for the same job, there are at least 100 other applicants, right? So there could be a potential reason that, you know, your resume is not having the right keywords. So maybe some issue in your resume content, or it may be something else, you know, which is beyond your control. So even if you have everything right, so you're still not getting shortlisted. Totally practically possible, right? So again, the reason why you miss out on the opportunity, and also like, you know, you are applying for n number of jobs, maybe 10, 50, 100, 200, still you're not getting the calls. Very practical situation, right? So many a times candidates do miss out on the opportunities due to certain reasons. And that is where Relevel has been introduced, guys. So this India's first tech hiring platform by Unacademy, okay? So which is actually helping you to get your dream job. So basically how you're getting this, you're getting the job based purely on your skills and talent, nothing else, okay? So you're not supposed to be dependent on any sort of degree or any sort of your networking. It's purely on your skill and talent, okay? So here it's basically an assessment platform. So you have to choose a portfolio, basically you know, domain which you want to be part of, and then you are expected to go through an assessment. Okay, so assessment will be comprising of certain levels, certain different levels. Yeah. So you have to clear that, and I mean, so the whole thing is like you have to get the best score out of the assessment, right? That's the only qualifying criteria. So once you have the great score, that's it. You're not supposed to be dependent on anything. So that is the reason why it is purely dependent on your skills and talent and nothing else. Great. Apart from being, a simple tech hiring platform, it has other benefits as well. If you participate in the Relevel testing platform, I will just brief you on some of the benefits. So as I've told you, there are many companies there which are directly hiring from Relevel platform, right? So there are 50 plus companies, including the top startups, unicorns such as ENY, Cred, Upgrad, Razorpay, Urban Company, and many more. They are hiring directly through Relevel, right? And there are 1,000 plus open job positions across three important portfolios right now: business development, front end, and the back end development, right? And there are multiple roles available within these portfolios. Okay. And the good thing is this Relevel platform is completely online, guys. So you're not supposed to be physically present anywhere. So you're going to be, you're going to do everything from the comfort of your home. So you're not supposed to step out anywhere. It's purely completely online based platform. Okay. And the best part of this is for completely free. There is no money involved in this. And no hidden charges. So it's like you're giving this test for completely free, right? And yeah, it's a beta platform. There might be few charges later, but right now it's completely free, right? And as I've said, there are multiple rounds of assessment. So the only expectation from you is you have to finish your entire test in a single day, and that day could be of your choice. Okay. And the Relevel score, basically, once you've given the test, you'll be getting the score within a week's time.
right? So once you clear the test, guys, with the qualifying score, right? So you'll be able to create an amazing candidate profile, which will help you showcase your skills and stand out from the crowd. And or something that stands out, you always know that it's going to be noticed by the companies, right? So to get the Relevel profile, the candidate has to score at least 70% of marks. So there are right now it's for 1,000 marks. So you have to score at least 700. That's the qualifying marks for you. Okay, higher the better. Great. And also the thing is the candidates can take this test a number of times, but the only thing is they can only retake the test after 30 days of your first attempt. Okay, so the gap between two takes is gonna be 30 days. Okay. The candidates will be awarded with some exciting goodies like MacBook, iPhone, and something else. So depending on the scores which they're getting, so the highest score getters for a particular category in a month, they'll be awarded with some exciting goodies, right? So with this Relevel, guys, you're in a unique position to invite the interest from companies instead of you hunting for your own job, right? So once you have given the test and you have get the good score, you have to just sit back and relax and then wait for the companies to call you after your Relevel score, right? Great. So again, the registration on the Relevel platform is quite easy, guys. So you can use the link on the given in the YouTube description, right? So with this, you can register yourself. And the next thing it will ask you to select the test of your choice. As I was telling you, so there are 3 portfolios: business development, front end, and the back end development. Multiple roles within these. So sales associate, customer engagement associate, relationship manager, and business development. In the front end, we have Angular developer, web developer, backend, maybe we have software engineer, data engineer, and all that, right? So depending on your area of interest, right, you can choose the test of your choice. And once you have done that, the next thing would be to select the date of your test, right? So once you have selected the test, the next thing will ask you to select the date when you want to give your assessment, right? So as I've said, you have to finish your entire assessment in 1 day of time, right? So, and again, the slots are limited, so I would suggest you to book it fast. So once you have selected the date of your choice, right? So next thing is it will ask you to create a neat video resume. Cool. So talk about yourself, like talk about yourself in 30 seconds to 3 minutes of a video, like what you've done so far, and talk about some good accomplishments, like your journey. Why the company should hire you and all that. So and basic requirements, you have to be well groomed, good lighting, good sound, and all that, right? So talk about yourself in that video and then submit it. So that's going to be your video resume. Once you have done that, that's it. So you have to wait for your D-Day, and D-Day is going to be your testing date, right? So you have to talk about yourself, so basically you have to give your best in your examination date, right? So guys, so this is the time for you. So do register for the Relevel platform. The link is there in the description as well. Great. Cool. So after this, guys, we have a official Telegram channel as well. Again, the link is on the description of the video. Do feel free to join this channel. So there's a one place stop for you to have your all the queries answered. All the upcoming classes, all the upcoming schedules, you're going to get it right there in this Telegram channel. All the updates will be right there for you. Thanks, guys. So I would again request you to do subscribe, like, and share the video, right? So this is the least I can expect from you. So if you feel that you're getting benefited, so we would expect you to motivate us as well. Right. So with this, we are into SQL things. So let's jump into our SQL queries straight away. Okay. Anybody has any questions so far? So I'm gonna pull up the questions one by one. So I'm gonna do that. So let's solve it straight away. So we have few easy questions to start with. Okay. So do not think that I'm gonna only be solving the easy questions. But again, to get the look and feel of my database, I'm gonna solve few questions. Again, I want you to interact on this. Okay. And we're gonna be doing it likewise. So okay, so starting will be few questions, easy ones, then we're gonna jump into the next set queries, joins, and multiple tables sort of thing. Okay, so I'll answer everybody's questions, so do not worry about that. Cool. Hello Suman, thank you for joining in. Hello Bharat, good morning. Jajinane, thank you for joining in. Swaroop, hi sir, always stuck in questions related to joins, correlated queries. So those questions would be nice to practice more as well. Definitely, yeah, Swaroop. So that's the agenda. I'll try to solve as many questions as we can. So that's the agenda, right? So let's see how many we can solve. Okay. So chalo, quickly, let me just walk you around through the MySQL workbench. Okay, so basically, kya hai hamare paas yahan pe. On the left hand side, guys, you can see this. I have certain databases already prepared.
So Sakila, system, and world. These three should be by default present in your MySQL workbench once you do a local DB setup. If not, do not worry. Maybe I'll be able to share the SQL file to set up this database with you. Okay, I can do that. It's okay. Do not worry about that. Okay, company, I have added it on my own. So I have created this new databases. Again, I have the SQL file already ready with me for company. I'll share it with you separately. Connect with me on LinkedIn. We can do that. But again, for the other three, so this should be by default present. Still, if it is not present, do not worry. You can still solve it. I'll be showing you the data, and you can still tell me the responses, and then we can solve it straight away. Okay. So now I'm gonna be solving the questions from the DB Sakila. Okay, so Sakila has certain tables in it. So let's try to quickly work around. Let's try to quickly see what all tables are there. Okay, so ये basic कर सकते हैं हम. So सबसे पहले, to use any particular DB, right? So I'm not sure if you're aware because this is again not part of our lectures, but again, just if you have multiple DBs and if you want to use a particular DB for your purpose, right? So there's a keyword use, okay? And again, I was saying this, since SQL is a case sensitive statement, but MySQL takes care of the casing issue internally. So I can I can write use both in the lowercase as well as uppercase. That's totally fine. Okay, so I can also write USE capitals, or I can also write USE small. That's totally fine, right? So I'm writing it use Sakila and following by the semicolon. So that's it. I'm gonna say the command, the compiler, to use Sakila DB. Okay. So now every command will be running on top of my Sakila DB. So that's how I'm gonna select a particular DB. Okay. नीचे में आपको दिखाई देगा यहाँ पे this is my action outputs. So basically the output which I have of the commands which I have run. ठीक है, so I'm gonna do that. So let's do it one by one. So सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ मैं, I have multiple tables here. So you can see this under Sakila I have something called as tables, views, procedures, and functions, right? So let's focus on tables for now. So tables, I have multiple tables here, right? You can see this. So what I can see is I can also look out what all tables are present and what all schemas are there in this table. Because if you do not know what is present inside my tables, then there is a problem, right? Because you do not know what all the information present, how to interact with my multiple tables, what is the relation. So always advisable for you to look at your tables to find out what is there inside your tables. Schema kya hai, what are the tables, है ना? So basic command है again show tables. अगर आप show tables करते हो तो it's gonna show you the tables within my each of the DB. ठीक है? So हमने क्या करा, आप देखोगे यहाँ पे again it is returning in the form of a view table. So this is your output, right? Again in the form of a table. So this is called as a view table, guys. Okay, so this is my output. We are not storing this output table anywhere. This is just a runtime visibility of my output, right? And you can see this, the name of the tables, actor, actor info, address, category, city. These are my name of the tables. ठीक है? अब इस टेबल के अंदर स्कीमा क्या है, वन बाय वन वो भी चेक कर सकते हैं. ठीक है? मैं चाहूँ तो इस पे भी रन कर सकता हूँ, बट आपको यहाँ पे ईजर भी दिख जाएगा. So you can left hand side you can see this. You have all the tables name mentioned here. Like for example, actor, है ना? You can see a small arrow here. If you do this, you can see columns name. If you put out the columns name, you can see this. This is the column here. Actor ID, first name, and last update. So these are the columns available within the table actor, है ना? So I have written and likewise you have address, you have category, city, country. So सब में क्या है हमें थोड़ा basic idea होना चाहिए to start writing our queries. ठीक है? So I have written a rough note here. You can see this. So I have selected few tables like category. I'll write actor also here. Select star from actor. स्टार का तो आपको पता है, स्टार का मैंने क्या बोला था, स्टार I said I want all the columns from the actor and there is no where command. So basically I'm not filtering anything on the row as well, right? So basically I'm asking the compiler to give me all the information, whatever row, whatever columns present in this table actor, right? Likewise I'm doing it for category, film category. I have multiple tables here. So I have selected few tables just to see इसके अंदर data क्या है. ठीक है? Let me run this. So if I just run it like this, right? So I'll get some outputs here. You can see multiple outputs coming up, right? So multiple view tables coming up. So you can see first is my actor table. So this is my table. This is the data, how it looks like in actor. So I have actor ID, I have first name, I have last name, I have last update, right? So I have actor ID mentioned with, this looks like a unique ID, right? So I have
actor IDs as individual IDs for my actors, the first name and the last update. Likewise for category, I have category ID, name and last update. So basically looks like the category ID of the film. So action film, animation film, children film, classics film, right? And then I have film. So film says I have film ID, the title of the film and the description, release year, length and all that, right? So this database is talking about the films basically. So basic idea, just try to have a look and feel of this data, right? So category में क्या है? Category में for a particular category ID, the name क्या है? उस category मतलब कौन से category का film है? Is it like what is the genre of my film basically? है ना? Likewise, I have film here. So film में क्या है? Film में I have the film ID, है ना? So film ID और category ID तो कहीं से मिल नहीं रहा है. अब देखो इसमें क्या है, फिल्म आईडी और कैटेगरी आईडी का सिलेक्शन है. सो बेसिकली द फिल्म आईडी इज नाउ बिलोंगिंग टू द कैटेगरी आईडी 6. नाउ लेट्स गो बैक टू द कैटेगरी. इफ आई सी हियर, सो कैटेगरी आईडी इज 6 इज डॉक्यूमेंट्री, राइट? So basically film ID 1 is documentary. Now what is film ID? So film ID 1 is Academy Dinosaur, right? So the film ID 1, the name is Academy Dinosaur. This is a documentary film. So you can get this information using category, film and film category by the combination of these three tables. Correct? Basic idea लग रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? I'll jump into the codes, guys. Do not worry about that. I'll jump into the codes. But as I've always said, it is always important to visualize your data first before writing the queries. Okay? किसी को कोई question हो, do let me know that. ठीक है? So to get this information that जो particular film है मेरा वो कौन से category को belong करता है, for this I have to first get what is my category ID, right? So film के साथ corresponding category ID ये है. So first I'll get film ID 1 के साथ category ID 6, and this category ID 6 is belonging to documentary. So to get this information documentary, I have to combine both the tables, category and film category, both from my film. Correct? Likewise, I have some inventory data. So inventory ID, film ID, store ID, basically rental के लिए है, payment है. Then I have rental informations also. ठीक है, some nice informations there. So now let's try to jump into the queries. ठीक है, अभी look and feel तो basically पता चल गया आपको how my data looks like and basic information आपको पता है ना. Now once I jump into the codes, right? So once I start writing the queries, do feel free to ask me your question because I will not directly write the queries. I'll first ask you, आपको वो data समझ में आ रहा है? If you are able to understand the data, then only will write the queries. ठीक है, nested वगैरह सब करेंगे. Do not worry, guys. चलो, let's try to do our first basic questions करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, चलो क्विकली गाइस. अब हमारे पास क्या है? डिस्प्ले फर्स्ट एंड द लास्ट नेम फ्रॉम टेबल एक्टर. सिंपल है, वेरी सिंपल. टेबल एक्टर क्या है आपके पास? यहां पर है. टेबल एक्टर में से मेरे को क्या बोलना है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है. क्विकली गाइस, व्हाट विल बी द क्वेरी हियर? आई डू नॉट वांट टू वेस्ट मच टाइम इन दिस सिंपल क्वेरीज. Come on guys, what will be the query here? How will you display the first and the last name from the table actor when your table will looks like something like this? So you have this is your table, actor ID, first name, last name. Cool, yes, great, absolutely guys. We're gonna do that. Select first name. क्या क्या है नाम देख लेते हैं. फर्स्ट नेम अंडरस्कोर में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एक्टर. कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल है बिकॉज हमने कुछ भी वेयर क्राइटेरिया लगाया नहीं, सिंपल लगाया यहाँ पे. देयर इज नो रो फिल्ट्रेशन. आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आई जस्ट आस्क्ड यू टू डिस्प्ले ऑल द नेम्स. देयर इज नो फिल्ट्रेशन हियर, राइट? सो आई हैव सेलेक्टेड दीस टू कॉलम्स व्हिच आई वांट टू प्रिंट फ्रॉम द टेबल एक्टर. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी सिंपल. इफ आई डू दैट आई विल गेट द आउटपुट. द आउटपुट इज लाइक आई हैव द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम हियर. Cool, किसी को कोई इशू नहीं है. Let's jump into the next one. चलो, this one, display all the actors where last name is Harris. Cool guys, can somebody tell me what is the query here? Again guys, very simple. So this is your last name. I'm saying that now I'm gonna specify, I'm gonna say that you have to filter out the names where the last name is Harris. Yes, select last name. No, display all actors where last name is Harris. Okay. So I can do it anyway. So
when I say all actors now, so I can even find out I can even print the last name, or I can even print the actor ID, first name, last name, or wherever. So I can, or let's try to do this. Select actor ID. So actor ID is underscore mein. Actor ID. I'm going to print everything. Okay. So first, last name is also fine. No problem in that. But still, let's try to print everything. So last name from actor, right? Now people are saying where Harris like Harris, where last name like Harris, where last name is equal to Harris. Great guys. Everything, even Sumant, your response is fine. Where last name like percent Harris. No, percent Harris तो थोड़ा गलत है, because क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ, last name is Harris, so I'm specifying a particular character. Now if you're writing percent Harris, or you're saying that even say ABC Harris will also come here, right? So that is incorrect. So I cannot write like percent Harris. I will be saying like Harris completely, so no percent is there. Okay, great guys. So chalo, let me run it for you, and किसी ने शायद ये notice नहीं किया है. Let me show it to you. From actor where last underscore name is equal to or like anything is fine. Okay, so I'm just writing equal to only for now, like this. Harris is what you're saying, right? So look at this. So this is your output. Cool. आप सेम चीज लाइक पे भी रन कर सकते हो, लाइक भी रन कर लो यार, लाइक भी रन करोगे तो सेम ही आएगा. ठीक है. इनफैक्ट आप लाइक परसेंट हैरिस भी रन करोगे ना तो सेम ही आएगा आंसर. बट लेकिन बाय वो क्वेरी जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो, बिकॉज हो सकता है कि अगर सपोज कोई दूसरा हैरिस के पीछे कुछ और भी होगा ना तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज अब मेरे को सिर्फ एग्जैक्टली हैरिस चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए कि एनीथिंग बियॉन्ड हैरिस इज ऑल्सो फाइन. दैट इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. आई वांट exact Harris, HARRIS, right? So I don't want this person to be in place. ठीक है. Yes, Shrikant, your query was correct. I think you mentioned the same thing. Yes, select last name from actor भी कर सकते हैं ना. What's the problem in that? So is in that case ये actor ID first name display नहीं होगा. ये भी सही है. आप शायद इक्वल टू आपने लिखा था, राइट? सो इक्वल टू भी कर सकते हो, इक्वल टू तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप ये सिंपल रन करते हो आपको स्टिल सिर्फ लास्ट नेम दिखाई देगा, बट इससे लास्ट नेम से हमें पता नहीं चला ना, एक्टर का डिटेल्स नहीं पता चल रहा है, तो लॉजिकली सेंस नहीं बन रहा है इसमें. तो बेटर होगा कि आप एक्टर आईडी फर्स्ट नेम पे प्रिंट करो, तो मोर लॉजिकल है. कैपिटल में क्यों प्रिंट हो रहा है? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन महावीर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क अर्लियर. ठीक है, देखो क्योंकि हमारे पास क्या है, आप देखोगे ओरिजिनल डेटा में हमारे पास सब कुछ कैपिटल में है. मिनी, जेलवेगर, जूलिया, कैमरॉन, रे, उमा वुड, फे वुड, सब दिख रहा है, सब कैपिटल में. इन द डेटा इटसेल्फ वी हैव एवरीथिंग इज इन कैपिटल्स, राइट? अब देखो जनरली क्या होता है, अगेन माई सीक्वल वर्कबेंच जो है ना, माई सीक्वल वर्कबेंच बेसिकली आपका इट टेक्स केयर ऑफ केसिंग. मैंने आपको बताया था ना, इंटरनली वो केसिंग को हैंडल करता है. बट अगर आप यही सेम कोड इफ यू रन इट ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट, इट विल गिव यू जीरो रिजल्ट्स, बिकॉज केसिंग का इशू हो जाएगा वहां पे. वो हैरिस को फाइंड आउट करेगा, हैरिस तो मिलेगा ही नहीं उसको, बिकॉज स्मॉल्स में है, यहाँ पे कैपिटल हैरिस है. सो इन दैट केस यू विल हैव टू राइट दिस HARRIS if you're running the same command on command prompt. ठीक है, जब आप CLI रन करोगे इसको, तो you have to make sure of your casing also. ठीक है, बट इसकी बेनिफिट यही है, जब आप MySQL वर्कबेंच या किसी प्लेटफॉर्म से रन करते हो क्वेरी को, तो वो केसिंग को हैंडल कर लेता है इंटरनली. ठीक है, तो इन दैट केस इवन आई कैन राइट HARRIS, it will by default take care of the casing part. ठीक है. श्रीकांत से what I wrote select star from actor from, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, स्टार भी कर लो, आपको सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे यार, कोई इशू नहीं है. हाँ बिल्कुल मनोहर, आप स्टार भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है. अगर हमने ऐसे प्रिंट कराना हो कि कॉलम नेम एंड बीनीथ इफ दैट कॉलम्स का डेटा, मैं समझा नहीं यार. अगर हमें ऐसे प्रिंट कराना हो कि कॉलम नेम एंड बीनीथ इट दैट कॉलम्स डेटा, हाँ तो कॉलम नेम के अंदर तो कॉलम डेटा आ रहा है ना, लास्ट नेम के अंदर ही तो हैरिस आ रहा है. मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन स्वरूप, प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दो. मतलब आउटपुट तो वही आ रहा है ना. देखो हम एक्टर आईडी सेलेक्ट करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रन करता हूँ, देखो अब मेरे पास क्या है, ये कॉलम आईडीज है ना, एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये मेरे कॉलम्स का है, यहाँ भी कॉलम्स हैं. ये कॉलम्स के अगेंस्ट में मेरे पास टेबल आ रहा है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द डेटा. सो इसके अगेंस्ट में तो डेटा आ रहा है ना.
यस मनोहर, बाय डिफॉल्ट इट विल चेक बोथ द केसेस, अपर केस एंड लोअर केस, वो कन्वर्ट नहीं करता है, इट विल चेक फॉर बोथ द केसेस. सो जनरली देखो इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आप इसको जनरली रन करते हो ना कहीं पे, मतलब क्या कहते हैं, जब when you're running this on a CLI, right? So the always advisable is you pass this last name under lower. So you're gonna convert this entire thing into a common case. So आप यहाँ पे करते हो lower कर देते हो, and then इसको भी आप by default वैसे तो lower में ही है, but generally आप इसको lower के अंदर पास करते हो. ये when you are running on a production environment, जब आप अपने business पे run करते हो, when you are running on a business environment, right? So this is what we do. So we try to match the casing, because वहां पे हम MySQL workbench पे रन नहीं कर रहे होते हैं, right? हम वहां पे हम किसी कमांड, वहां पे किसी environment server पे रन कर रहे होते हैं, right? So casing वहां पे important है. So in that case, to make sure the casings are same on the both side, I'm gonna pass both the names, both the filter column as well as the criteria is in one single casing, either upper or lower. ठीक है. So this is the standard way of doing it, but very well pointed out Mahavir. I wanted to show this. Great. So this is how the things are. ठीक है. बट यहाँ पे MySQL वर्कबेंच में, एज आई टोल्ड यू, ये प्लेटफॉर्म्स टेक्स केयर ऑफ केसिंग पार्ट इंटरनली. ठीक है. स्वरूप क्या है, जैसे कॉलम नेम को हमने मैनिपुलेट करना हो, लाइक कॉलम नेम इज फर्स्ट नेम, ठीक है, बट वाइल प्रिंटिंग मेक इट एज फर्स्ट नेम, इसको एज से करके करते हैं क्या? हाँ, अरे हाँ यार, बिल्कुल सही बोला आपने. देखो फर्स्ट नेम एज फर्स्ट, चलो ऐसे प्रिंट कर देते हैं फर्स्ट. लुक एट दिस, दिखा आपको? हमने इस फर्स्ट नेम को एज से रीनेम कर दिया फर्स्ट. दिख रहा है आउटपुट में आपको? वेरी वेल क्वेश्चन, वेरी वेल आस्क्ड क्वेश्चन स्वरूप. यस, वी डिस्कस दिस पार्ट इन आवर यस्टरडेज लेक्चर, राइट? सो यस, तो एलियासेस आपका एज में कहीं भी ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऐड कर दिया, राइट? सो आउटपुट में आपको फर्स्ट दिखाई देगा. एलियासेस किसी भी कॉलम में कभी भी ऐड कर सकते हैं. आई थिंक ये हमने कल पढ़ा था. ठीक है. अगेन अ गुड क्वेश्चन गाइस. कूल है, सिंपल है, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है. बेसिक में तो बहुत मजा आ रहा है सबको. चलो अभी हम एडवांस भी करेंगे, उसमें सबका हम पूछेंगे आंसर्स ना. अभी तो बेसिक में सबको मजा आ रहा है. चलो चलो, अब क्या करना है? डिस्प्ले ऑल नेम्स टुगेदर एज अ सिंगल नेम. अब मेरे को क्या करना है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. अब सपोज एक्टर में क्या है, सपोज मेरा नाम अर्पित है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है जैन. आप अलग अलग तो प्रिंट नहीं करोगे. मेरा नाम क्या है? अर्पित जैन है, राइट? सो यू हैव टू कॉन्कैटिनेट दिस, यू हैव टू मेक इट एज अ सिंगल वन, है ना? सो नाउ हाउ विल यू प्रिंट दिस? सो इफ यू हैव टू प्रिंट द नेम, द फुल नेम ऑफ द एक्टर, हाउ कैन यू डू दैट? Quickly guys, any guesses? Display the full name of the other actor. Basically this is the question. Select concat first name plus last name. Okay, आपने plus बोला है. Okay, we'll see that. But concat ठीक है, definitely. Great. अमनदीप ने अच्छा आंसर दिया है. कोडिंग, आई डोंट नो योर नेम, बट अगेन फर्स्ट नेम प्लस, यार देखो पाइथन में होता है, बट इन सीक्वल प्लस नहीं करते हैं, कॉमा से करते हैं. ठीक है. अमनदीप ने एकदम सही रिस्पॉन्स किया. लेट्स लुक एट व्हाट अमनदीप इज सेंड. एनीबॉडी हैज एनी अदर रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस गाइस? क्विकली इन द चैट, आई एम गोना रन इट दिस क्वेरी फॉर यू. नाउ सेलेक्ट व्हाट पीपल आर सेइंग. कॉनकैट, कॉनकैट की स्पेलिंग आपके मन में गलत है, CATE नहीं है, कॉनकैट होगा. ठीक है. कॉन्कैट, मुझे क्या करना है? फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम. अगेन आपने शायद कोट्स में डाला है क्या? कोट्स में, ठीक है. लास्ट नेम फ्रॉम एक्टर. ठीक है. पहले मैं आपको ये शो करता हूं, फिर मैं एलियास करूंगा. ठीक है, जो मैं आपको कल दिखाना चाह रहा था. लेट्स डू दैट. देखो इसमें एक दो तीन चीजें एरर है, अब ध्यान से नोटिस करना. इसमें मैंने क्या करा? मैंने कॉन्कैट कर दिया. कॉन्कैट करा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को. पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा जो कॉलम का नाम है, आपको याद होगा मैंने कल को क्या बताया था? इफ यू पास एनी फंक्शन ना, इफ यू पास एनी फंक्शन ऑन योर टेबल, सो द व्यू टेबल का नाम विल बिकम द नेम ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ. सो दिख रहा है आपको? दिस इज द नेम ऑफ योर व्यू टेबल, कॉन्कैट पैरेंथेसिस फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम. इफ यू डू नॉट एलियास इट, राइट, that's the problem. Because if you want to use this column further for your next nested queries like this, so you cannot call this complete name. Now it's difficult for you. So rather, it's always good to write an alias here as say full name. So now this
name where the name is coming as like column name as concat first name comma last name, this will be changed to full name now. Okay, now let's simply run this and let's see what is the output. ठीक है, same you see this, now this column का नाम has changed, so now this column नाम has full name, right? Now there's one more issue in this. I think people have already pointed out that. Can you see this? There is no spacings in between. So all the names, full name and the last name are joined together. There is no spacing. I mean, आप suppose मेरा नाम अर्पित जैन है तो ARPITJIN एक साथ तो नहीं लिख सकते, right? So अर्पित स्पेस जैन होता है, right? Basic thing है. So आप spacing बीच में डालोगे. So comma के बाद यहाँ पे आप एक space डाल दो, extra character, कुछ भी space and then this. So now if you run this, you'll get the names in the spacings with the now you have the spacings. किसी को कोई इशू गाइस, आई थिंक पीपल हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट, बट किसी को कोई भी इशू है इसमें गाइस, कम ऑन, दिस इज अगेन अ गुड कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज है, वेरी बेसिक थिंग्स बट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर नेस्टेड क्वेरीज. नेस्टेड क्वेरीज ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाती है, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इसमें कोई इशू है? अगेन ये बहुत बेसिक क्वेरी है गाइस, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए. अगेन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स जंप अहेड. चलो yes, परक concat is a function. Yes, concat आपका इनबिल्ट फंक्शन है, so concat आप फंक्शन यूज कर सकते हो like this. सुमंत अंडरस्टूड. मृणाल सर लोअर वाला एक बार थोड़ा बताना फिर से, लोअर वाला कौन सा है? ये वाला पूछा क्या? अच्छा ठीक है. सो अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, यहां पे आप नोटिस करो, in your data you have what, you have everything in the capital letters, right? So आपको दिख रहा होगा mini Zellweger, right? So mini is in caps and Zellweger is in caps, right? So by default आपका database के अंदर ही सब कुछ caps में है, right? And suppose आप किसी environment में, आप अपने ऑफिस में रन कर रहे हो, अपने बिजनेस में रन कर रहे हो, and you do not know this data, it's a very big data, कुछ capitals में है, कुछ smalls में, you do not know that, right? कौन से capital में, कौन से small में, you do not know that, but आपको वो सब कुछ चाहिए जहां पे भी हैरिस है, राइट? वेदर इट इज कैप्स और वेदर इट इज स्मॉल, आपको ऑब्जेक्टिव तो यही है, आपको डेटा में पता नहीं है, राइट? सो द थिंग इज, सपोज आप किसी एनवायरमेंट में अगर रन करते हो, किसी प्लेटफॉर्म में रन करते हो, लाइक माई सिक्वल वर्कबेंच या फिर ओरेकल डीबी या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करते हो, जैसे डीबीवर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके, टेबल प्लस, जहां पे भी रन करोगे, तो दिस प्लेटफॉर्म टेक्स केयर ऑफ योर केसिंग. ठीक है, इंटरनली वो क्या करेगा, इंटरनली क्या कर रहा है, वो हैरिस को यहाँ पे स्मॉल हैरिस भी चेक करता है, कैपिटल हैरिस भी चेक करता है. अब जब इसको रन कर रहे थे, आपको क्या दिखा था, आउटपुट आपको दिख रहा था ना कैपिटल में, कैपिटल हैरिस भी. दिस इज हाउ इज कमिंग अप, राइट? बट जब आप किसी एनवायरमेंट में रन नहीं करते हो, जब इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हो आप, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द केसिंग. केसिंग में सबसे इजियर देखो, या तो आप या तो आप बोलो लास्ट नेम इन हैरिस, या फिर कॉमा में HARIS. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फाइन, करेक्ट? समझ रहे हो आप? बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, स्मॉल हैरिस और कैपिटल एस दोनों काम करेगा, ये भी आप ये क्वेरी भी रन करेगी आपकी. बट सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी एनवायरमेंट में रन करते हैं ना, किसी मतलब ऑफिस एनवायरमेंट में या सर्वर पे रन करते हैं, तो यू आर पासिंग इट ऑन टॉप ऑफ लोअर, सो यू आर मेंटेनिंग अ कॉमन आइडेंटिकल प्लेटफॉर्म की जो आपका डेटा है वो भी किसी एक सिंगल के, या आप लोअर भी कर सकते हो, अपर भी कर सकते हो, इट्स फाइन. एंड ऑल्सो यहाँ पे लोअर अपर करते उसको कॉमन बना दो. सो बेसिकली यू आर फाइंडिंग आउट द कॉमन थिंग सिनोनिम बना करके. ठीक है मृणाल, थैंक यू. महावीर, रो में सारे कॉलम का सम करके नए कॉलम में इंसर्ट कैसे करेंगे, रो वाइज? क्या यार, रो में सारे कॉलम का सम करके, ठीक है, नए कॉलम में इंसर्ट. देखो पहले तो आपका दो कमांड है यहाँ पे, आप DML भी कर रहे हो, DDL भी कर रहे हो, सॉरी माय बैड, DDL नहीं कर रहे हो, आप इंसर्ट करना चाह रहे हो. ठीक है, तो आप पहले तो सम करोगे, सिंपल है आपका, आप पहले सम करा लो, मतलब आपका सबसे पहले सम होगा, एंड सम के ऊपर, सो इफ दैट सम इज डन, आप वो आपकी नेस्टेड क्वेरी हो जाएगी, उसके ऊपर आप इंसर्ट कराओगे. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल. मे बी हम एग्जांपल देख लेंगे, इसका हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले आप इसके पहले सम करोगे, सम को यूज दैट सम क्वेरी एज अ नेस्टेड क्वेरी, ऑन टॉप ऑफ दैट इंसर्ट. सो इंसर्ट इनटू जो आप लिखोगे वैल्यूज में, आप वैल्यूज नहीं पास करोगे, यू कैन पास दिस सेलेक्ट जो भी आप अपना सम करके बनाना चाह रहे हो, है ना, यू कैन डू दैट. ठीक है, चलो इसको साइड बाय साइड देखते हैं यार. आपने क्या बोला, सपोज वी हैव 3 सब्जेक्ट मार्क्स, ओके, एंड वी वांट टू ऐड न्यू कॉलम टोटल सब्जेक्ट. ठीक है, मार्क इन अ न्यू कॉलम. ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट?
आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो अब हमने क्या होगा, देखो यार सिंपल सी बात है ना, इसमें आप सबसे पहले जब आप इंसर्ट करोगे ना यहाँ पे कि जब आपने सपोज आपने एक अपडेट क्या किया, न्यू कॉलम को ऐड किया, ऐड कॉलम करोगे ना, वहां पे ऐड कॉलम में वैल्यूज डालोगे। ऐड कॉलम जब आप करोगे और जब उसमें वैल्यूज डालोगे तो वैल्यूज की जगह पे आप सम कर दोगे, सम ऑफ सेलेक्ट की जगह पे सम ऑफ योर रोज वैल्यू, सम ऑफ योर इंडिविजुअल वट एवर यूर ट्राइंग टू डू माई टेबल कॉलम्स के नाम। we'll take it as an example, so we'll try to solve it. Maybe शायद मैं इसको रन करके देखना पड़ेगा एक बार, but we can do that. ठीक है guys, coming back to a question again, इसको simple again, ये तो बहुत ही simple है यार। again my first name is Bob, ये तो मैं इनफैक्ट आपके लिए कर लेता हूँ, select cool guys। so मैं क्या करना चाह रहा हूँ, from actor where first name is Bob, चलो ये तो मैं करता भी नहीं हूँ, simple है, आपको ये पहले से पता है। चलो we will not do this, this is a very simple question। okay, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व, ये सिंपल है, 4 नहीं करेंगे 5 करेंगे। ओके, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एक्टर्स लास्ट नेम आर देयर, कैन यू काउंट इट? So the question is, you have to tell me how many distinct actors last names are there. Quickly guys, can somebody tell me this? Your question is, you have to find out how many distinct actors last names are there, unique last names. Quickly guys, how many distinct last names are there, distinct actors last names are there? ओके, महावीर सुमंत, काउंट डिस्टिंक्ट लास्ट नेम। ओके, थोड़ा सा सिंटेक्स में एरर है महावीर, मैं आपको बताता हूं। सुमंत, आप क्या गलती कर रहे हो, आप पहले काउंट कर रहे हो लास्ट नेम, देन डिस्टिंक्ट कर रहे हो। अब लास्ट नेम को काउंट कर लोगे तो फिर डिस्टिंक्ट क्या होगा, डिस्टिंक्ट कैसे काम करेगा उस पर? I'll show it to you, I'll show the code to you, but I'll make you explain। अभिषेक, डिस्टिंक्ट लास्ट नेम करना है हमें, काउंट चाहिए, काउंट भी इंपॉर्टेंट है। परख, काउंट डिस्टिंक्ट लास्ट नेम, डिस्टिंक्ट भी फंक्शन है, आपका भी सिंटेक्स गलत है परख। अमनदीप, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट लास्ट नेम। अमनदीप अगेन सेम एरर। सो आप काउंट अगर पहले कर दोगे फिर काउंट के ऊपर डिस्टिंक्ट क्या चलाओगे, उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। आप पहले डिस्टिंक्ट करोगे फिर काउंट करोगे, राइट? सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट लास्ट नेम। अगेन मनोहर, आपका थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट के बाद वो भी एक फंक्शन है। चलो गाइस, आई थिंक वेरी गुड ट्राई गाइस, बट थोड़ा सा सिंटेक्स का इश्यूज है, इसलिए मैं थोड़ा सा अब नाउ वी आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, तो थोड़ा बहुत मल्टीपल फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, समझो पहले, ठीक है? हमें डिस्टिंक्ट एक्टर्स का काउंट निकालना है, हमें काउंट का डिस्टिंक्ट एक्टर्स नहीं निकालना है, समझ रहे हो? हमें डिस्टिंक्ट का काउंट एक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, डिस्टिंक्ट कैसे चलता है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फंक्शन है, फंक्शन हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं, राइट? डिस्टिंक्ट ऑफ लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम एक्टर, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे हमारा लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट लास्ट नेम, ठीक है? ये हमारा आउटपुट आएगा, कितने रोज रिटर्न हुए आपको दिखाई देगा यहाँ पे, टोटल मेरे पास 121 रोज रिटर्न हुए, दिख रहा है आउटपुट में। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लास्ट नेम जब मैंने करा तो मेरे पास 121 रोज रिटर्न हुआ, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 121 यूनिक लास्ट नेम्स हैं, हमें यही 121 प्रिंट कराना है, करेक्ट? आउटपुट में बस क्या है, अब डिस्टिंक्ट तो मुझे पता चल गया, बट अब इस डिस्टिंक्ट का मुझे काउंट करना है, तो इस पूरे के ऊपर काउंट फंक्शन रन होगा, तो एक और फंक्शन लगेगा यहां पे ऐसे। अब यहां पर मैं करूंगा काउंट, now count of distinct of last name, this is what I want, right? Look at this, so you have the output 121, so this is, and now this is like, you can rename this, you can see this, the output is, the name of the column is count of distinct of last name, so rename this as actor count, as unique last name, run this. So now you have unique last name as 121. किसी को कोई डाउट है, काउंट पहले होगा कि डिस्टिंक्ट पहले होगा? गाइस कम ऑन,
आपको डिस्टिंक्ट काउंट लास्ट नेम नहीं करना है गाइस, यू हैव टू। अगर देखो आप उल्टा कर रहे हो, अब मैं आपको आपका भी कोड रन करके दिखाता हूं। सेलेक्ट, अब आपने क्या बोला, पहले काउंट करते हैं, ठीक है। पहले हमेशा जब भी आप सीक्वल लिखते हो ना, तो अंदर से बाहर नहीं जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं। मतलब पहले अंदर वाला कोड को रन करते हैं, फिर बाहर वाले कोड को रन करते हैं टू चेक, ठीक है। अब सेलेक्ट काउंट आप लास्ट नेम करते हो पहले, ठीक है, फ्रॉम एक्टर, फ्रॉम एक्टर। अरे यार, ठीक है, ये हमने रन किया तो मेरा आउटपुट आ गया 200। ये मेरा टोटल है, इतने 200 एक्टर्स है मेरे पास, काउंट ऑफ लास्ट नेम है, ठीक है। अब काउंट ऑफ लास्ट नेम के ऊपर अगर आप डिस्टिंक्ट रन कर दोगे, तो डिस्टिंक्ट ऑफ 200 का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। डिस्टिंक्ट ऑफ 200 आप रन करोगे, लुक एट दिस, ये इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। आपको आउटपुट सेम ही आएगा। आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ डिस्टिंक्ट का वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है आपने। 200 एक ही तो वैल्यू है, 200 होता है, 200 मल्टीपल टाइम्स होता है तो 200 का सब कुछ आउटपुट होता है। आपने काउंट का डिस्टिंक्ट कर लिया, आप समझ रहे हो? वो हमें नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट पहले निकालना है, उस डिस्टिंक्ट का हमें काउंट करना है। क्लियर गाइस? किसी को कोई इशू है डिस्टिंक्ट पहले होगा कि काउंट पहले होगा? बहुत लोगों ने सेम मिस्टेक करी है। सो हमारा आउटपुट क्या है? पहले हम डिस्टिंक्ट निकालेंगे, इससे हमारा डिस्टिंक्ट पता चलेगा कितने यूनिक लास्ट नेम्स हैं, और इस यूनिक नाम लास्ट नेम का हमने काउंट करना है, तो हम इसके ऊपर काउंट चलाएंगे, ठीक है। सिंपल है गाइस, बट ट्रिकी है ना, थोड़ा इसको क्लियर तरीके से समझेंगे हम। आई होप नो बडी हैज एनी इश्यूज इन दिस। आई वॉन्ट एवरीबडी टू से यस प्लीज। जिसने जिसने गलत रिस्पॉन्स किया है, आई एम मॉनिटरिंग यू, यू हैव टू से यस कि आप ओके हो, देन आई मूव अहेड। गाइस इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज I am not here to complete the course. I am still telling you this. I'm here to make you understand this code. If you're clear, just say yes quickly. हाँ, डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी है यार, बिल्कुल कीवर्ड है। यस, डिस्टिंक्ट इज अ कीवर्ड, तभी तुम यूज करें ना। इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन। तो डिस्टिंक्ट एज अ कीवर्ड भी है, तो यू कैन यूज इट एज अ फंक्शन। ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक ये हमने अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो लेट्स सॉल्व सम अदर गुड क्वेश्चन। चलो, दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी होगा। चलो, यू हैव दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। डिस्प्ले ओनली दोज लास्ट नेम्स विच आर नॉट रिपीटिंग, ठीक है। सो यू हैव टू डिस्प्ले ओनली दोज लास्ट नेम्स विच आर नॉट रिपीटिंग। डिस्टिंक्ट से भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोना डू इट विद डिस्टिंक्ट, ठीक है। वी गोना डू इट थ्रू से ग्रुप वाइज। कैन वी डू इट थ्रू ग्रुप वाइज? हाउ टू लिस्ट ऑल कीवर्ड्स इन माई सिक्वल? यार ये तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। मैं आई हैव टू फाइंड दिस आउट फॉर यू। इवन आई एम नॉट श्योर हाउ टू लिस्ट ऑल द कीवर्ड्स, ऑल बिल्ट इन। यार टू बी ऑनेस्ट, एज आई सेड, मेरे को बहुत क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू लिस्ट ऑल द कीवर्ड्स, बट देयर आर सर्टेन वंस व्हिच वी जनरली यूज, सो वो मतलब आई नो इट, बट हाउ टू लिस्ट ऑल दिस आई एम नॉट श्योर। मे बी वी कैन ट्राई गूगलिंग इट, मे बी यू कैन गूगल इट एंड लेट मी नो ऑल्सो। Okay, so we have one response from coding. Okay, good, good. तन्मय नहीं है, ग्रुप बाई मैंने कल पढ़ाया था at 2 PM, so we covered this yesterday. नहीं, सेलेक्ट ग्रुप बाई वेयर लास्ट नेम। स्वप्निल, आपने बहुत ब्लंडर किया इसमें। पहली बात क्या आपको मैंने बताया था, वेयर हमेशा ग्रुप बाई से पहले होता है, ग्रुप बाई के बाद हमेशा हैविंग होगा, ग्रुप बाई के पहले वेयर होता है। वेयर कभी भी ग्रुप बाई के बाद नहीं हो सकता है। और आपने सेलेक्ट ग्रुप बाई कर दिया है। सेलेक्ट ग्रुप बाई कैसे? पहले सेलेक्ट कोई कुछ तो कॉलम सेलेक्ट करोगे ना आप, कुछ तो सेलेक्ट करोगे। आपने सेलेक्ट ग्रुप बाई कर दिया है। What you want to print, you have not written that. स्वप्निल, ये कोड में एरर है। Amandeep, select star from actor, group by last name having count of last name equal to 1. Wonderful. Thank you so much, Amandeep. Yes. Manohar, select last name from actor, group by last name. Okay.
Select last name from actors, group by last name, having count of last name equal to 1. Parak, thank you so much. किसी को कोई इशू है? आई थिंक एवरीबडी इज ऑलमोस्ट फाइन विद दिस, राइट? अब देखो ग्रुप बाय हमने कैसे करा, सिंपल सी बात है, सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट कैसे करना है, सेलेक्ट लास्ट नेम करना है, प्रिंट ओनली दो, सेलेक्ट लास्ट नेम ही करते हैं, सेलेक्ट लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम एक्टर, ग्रुप बाय, अभी हमने ग्रुप बाय करना है, इसको डिस्टिंक्ट से भी कर सकते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम इन दैट, डिस्टिंक्ट से भी कर सकते हैं, बट मैं ग्रुप बाय भी शो करना चाहता हूं आपको। लास्ट नेम फ्रॉम एक्टर, ग्रुप बाय किससे करना है, हमने लास्ट नेम के ऊपर ग्रुप बाय करना है, राइट? बिकॉज आई वांट द डिस्टिंक्ट लास्ट नेम, सो आई वांट ईच ऑफ दीज हैविंग द सिमिलर काउंट। सो अब लास्ट नेम के ऊपर हमने ग्रुप बाय कर दिया, तो अब इसके ऊपर हमें कंडीशन भी लगाना है जहां पे लास्ट नेम के ग्रुप का काउंट जो है वो 1 ही होना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट इज नॉट रिपीटिंग, सो आई एम सेइंग दैट द काउंट शुड बी 1, सो दिस इज नॉट रिपीटिंग। सो हैविंग क्यों? बिकॉज ग्रुप बाय के बाद का कंडीशन है, ग्रुप बाय के बाद हमेशा हैविंग होता है, हैविंग ग्रुप बाय से पहले नहीं हो सकता, और वेयर ग्रुप बाय के बाद नहीं हो सकता, एंड इट्स अ फिल्टर ऑफ ग्रुप बाय, सो वी हैव टू राइट हैविंग काउंट ऑफ लास्ट नेम, और काउंट ऑफ स्टार भी कर सकते हैं, काउंट ऑफ लास्ट नेम भी कर सकते हैं, काउंट ऑफ लास्ट नेम इक्वल टू 1। कूल, अब इसको रन कर देते हैं, दिख रहा है? ये हमारे पास काउंट ऑफ लास्ट नेम ग्रुप बाय लास्ट नेम आया है, ये मेरे पास इंडिविजुअल आईडीज हैं जो मेरे पास रिटर्न होकर के आए, ठीक है? किसी को कोई इश्यूज है इसमें? आई थिंक ये सिंपल है, सबने कर लिया। हैविंग के पहले की क्वेरी ये वाली, अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं एक बार हटाता हूं। इसमें सारे ग्रुप वाइज आ जाएंगे ना यार, देखो ग्रुप वाइज से क्या, जितने भी ग्रुप बनेंगे ना, सारे ग्रुप्स आ जाएंगे इसमें, इसमें कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ। अब देखोगे आउटपुट जो है बेसिकली यहाँ पे आपका 121 रोज रिटर्न हुआ, ठीक है, ये 121 रोज है मेरे पास, बट जब आप यहाँ पे हैविंग कंडीशन डालोगे ना, जहां पे इसका काउंट यूनिक होगा, जहां पे काउंट इसके 1 होंगे, है ना, ये वाले, यहाँ पे इसके काउंट 1 होंगे, हैविंग काउंट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये देखोगे आपके नंबर ऑफ रोज जो रिटर्न होंगे इसके बाद ये कम हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे, बिकॉज नाउ आई एम सेइंग दैट कि कौन सा ग्रुप वाइज सिर्फ एक, कौन सा जो काउंट है आपके वो एक ही बार आ रहा है आपके पास, मतलब एक ही बार है, रिपीटेड नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ में आया? आई थिंक महावीर ने बोला था, महावीर, यस, एनीबडी एल्स? वन से ज्यादा क्यों होगा ना, जरूरी नहीं है कि 1 से ज्यादा होगा, 1 भी हो सकता है, बिकॉज वो सेम लास्ट नेम रिपीट नहीं हो रहा है। अब सपोज मेरा नाम जैन है, अर्पित जैन है, किसी और का नाम अमित जैन है, तो जैन तो 2 बार रिपीट हो गया ना, सो आई एम सेइंग दैट कि जैन रिपीट नहीं होना चाहिए, सो मेरे को सिर्फ वही चाहिए कि वो एक बार ही आए, यूनिक। आई एम सेइंग दैट द लास्ट नेम्स व्हिच आर नॉट रिपीटिंग, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है पारक? कूल, चलो अब सिंपल एक और क्वेश्चन है, इसमें कर लेते हैं, इसी के ऊपर एक एडवांस्ड है, विच लास्ट नेम्स आर अपियरिंग मोर देन वंस। अब वो you have another question, which last names are appearing more than once, similar है, no fancy things here, so I'm saying this for this, first I said which are not repeating, and now I'm saying them which are appearing more than once. Quickly guys, quickly, come on, this is very simple, same question, same query. Which are appearing more than once, the last names which are appearing more than once. Yes, exactly, thank you so much coding, yes, so same as previous one, but again the condition here is last में having count name का हमने greater than 1 कर देना, equal to 1 नहीं करना, because I'm saying this it should repeat more than once, right? It should repeat. So I'm just gonna copy same paste thing here, so I'm gonna write it till here to save time, and then I have here, I have greater than 1, this is what I'm expecting, so this is what it says, right? So I have the which last names appear last than more than once, right? So I'm saying that group by last name having count of last name greater than 1, because now I'm saying that this last name is repeating,
राइट? किसी को कोई इश्यू है इसमें? एनीबडी हैज एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ फैंसी नहीं है, सो रन कर देते हैं. So now you'll see this. I have 55 rows where you're seeing that the last names are repeating. And can you see this, guys? Total मेरे पास 121 यूनिक था, राइट? डिस्टिंक्ट में भी 121 मिला था. उस 121 में से we saw कि 66 जो है एक ही बार आ रहा है, 55 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट? So 66 plus 55 करोगे तो 121 आ जाएगा. तो basically again your answer is right. This is one of the validation criteria. Okay, behind the scenes is having clause executed after select clause or after. मैं समझा नहीं. Okay, I think select clause और before आप पूछना चाह रहे हो. Okay, so देखो सबसे select तो यार देखो सबसे पहले क्या होता है, आप select हमेशा लास्ट में प्रिंट होता है, to be honest. ठीक है, अगर आप behind the scenes पूछोगे तो select सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, because select जो आप प्रिंट करते होते हो, है ना, select तो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है. बट जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, सेलेक्ट हम पहले लिखते हैं बिकॉज हम वी आर डिफाइनिंग कि हमें क्या प्रिंट कराना है एट द एंड, राइट? सो डेटा फ्रेम के अंदर तो सिर्फ सिलेक्शन हमने वो करा जो प्रिंट कराना है. ठीक है, सो बैकएंड में पहले हैविंग एग्जीक्यूट होता है, मतलब बेसिकली ग्रुप बाइज, वेयर ग्रुप बाय हैविंग एग्जीक्यूट होता है एंड इन दिस ऑर्डर, एंड देन लास्ट में सेलेक्ट एग्जीक्यूट होता है बैकएंड पे. Okay, which is best in terms of optimization, distinct or group by? Distinct actually better है, group by is हमेशा time consuming होता है, but again you will not see the optimization issues unless and until your database is very huge, है ना, very huge. So उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Both of things are equally fine, बहुत minor difference है, but group by is generally थोड़ा time consuming होता है. So जब आप कभी भी कोड लिखते हो ना तो group bys we tend to avoid using group bys as much as we can because group bys are always time consuming. Great, thank you so much coding. Abhinav, sir, what is the difference between SQL and SQL Plus? ये तो मुझे भी नहीं पता यार. SQL Plus I think most probably आप किसी I don't know if you're talking about NoSQL, तो but even I'm not 100% sure. Abhinav, sir, query runs from right to left. Okay, very good question यार. देखो, I won't say right to left. You have to understand first the order of your clauses. ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको कल clauses का order बताया था. सबसे पहले select होता है, select from where, then group by, then having, then order, then limit. So this is your order of your clauses. So ordering is very important. अभी कैसे execute होता है जरूरी नहीं है कि right to left होता है. ठीक है, जब आप देखो दो तरीके के क्वेरीज है, एक तो आपको सिंपल क्वेरीज है, एक नेस्टेड क्वेरीज है. नेस्टेड क्वेरीज में हमेशा अंदर से बाहर होता है, मतलब आप जो पहले इनर क्वेरीज होंगे पहले वो रन होते हैं, उसके बाद बाहर के क्वेरीज रन होते हैं. सो दैट इज अबाउट द नेस्टेड क्वेरीज. बट इन द जनरल स्टेटमेंट्स your order of your clauses is very important, so you have to always remember the order: select, from, where, group by, having, order, limit. So this is what you have, right? So in this, as I've said, select सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है. just an example, because select आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली प्रिंट कर रहे हो, यू आर प्रिंटिंग अ पर्टिकुलर कॉलम विच यू वांट टू सी. तो select सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, बट उसके पहले हमारा सबसे पहले वेयर एग्जीक्यूट होता है, फिर ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है, देन आपका हैविंग एग्जीक्यूट होता है, देन ऑर्डर होता है, देन लिमिट होता है. सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ योर एग्जीक्यूशन. अब लेफ्ट टू राइट मत पूछो, आप क्लॉजेस के हिसाब से पूछो. ठीक है, एंड देन सबसे लास्ट में सेलेक्ट एग्जीक्यूट होता है. You teach at CodeAcademy career as developer? नहीं यार, I'm more of you can say I don't know. I mean, you can consider me as a developer, but I'm not sure what your question is. So I'm teaching here Python and SQL. So I'm not sure if you're taking me as a developer, but yeah, I mean, you can take me as one. Right, guys. So किसी को कोई question है इसमें? ठीक है. आई थिंक यहां तक जो है ना, हमने जो अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं, राइट, सो ये हमारे जो 7 तक जो क्वेश्चन करे हमने, ये यहां तक बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है, मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है, राइट? आपको दिख रहा होगा, है ना? सो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. बट इसके बाद जो क्वेरीज है ना, नाउ वी हैव द नेस्टेड क्वेरीज कम अप. सो क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स, राइट? सो क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स, आई एम गोना क्लब मल्टीपल टेबल्स. ओके, so I'm gonna combine multiple tables and I'm gonna run the queries. ठीक है, cool.
Career as a developer, yes. In that case, yes. I'm teaching as career as a developer for subscription on Unacademy. No, but I'm not on the subscription part right now. So maybe later, but not right now. Can we do it on distinct? या डिस्टिंक्ट से भी कर सकते हैं, बट अगेन डिस्टिंक्ट के ऊपर भी आपको ग्रुप वाइज तो करना ही पड़ेगा. सिंपल डिस्टिंक्ट से नहीं आएगा, मतलब अगेन वो पाथ थोड़ा डिफरेंट है, बट अगेन सिंपल डिस्टिंक्ट से नहीं आएगा. डिस्टिंक्ट आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट का नाम बताएगा बट काउंट नहीं बताएगा, है ना. सो आप डिस्टिंक्ट के ऊपर काउंट करके उसको लिमिट करके कुछ कर सकते हो. मैन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन थिंक ऑफ, बट डिस्टिंक्ट से भी किया जा सकता है, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा. कैन वी डू इट वन एग्जांपल इन डिस्टिंक्ट? हाँ, कर सकते हैं यार, वी कैन डू दैट क्विकली. लेट मी चेक इट कैसे कर सकते हैं. बट मीनवाइल चलो एक काम करते हैं गाइस. वैसे एनीवे वी हैव अनदर सेशन कमिंग अप इन 11:15. सो मीनवाइल अभिषेक मैं आपका ट्राई करता हूँ ऑन यूजिंग डिस्टिंक्ट, ठीक है. सो आई विल डू इट इन द मीनवाइल. I'll try to show it to you using distinct also. So next class we're gonna start at 11:15, guys. Other people can take a quick 15 minutes break, है ना. So I understand Suman, so it's too much. So union से यार, union से तो union या nested queries के थ्रू union पता नहीं, I don't know. We have to think of union से भी शायद कर सकते हैं. Yes. Again थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सोचना पड़ेगा इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं. But again, I mean again, it's again simple concept है. Python की तरह ही सोचो ना इसको. Why you want to complicate the queries? जब सिंपल तरीके से काम हो सकता है. So do not complicate your queries. कोई भी तरीका गलत नहीं है यार आपका. जैसे मैंने बोला डिस्टिंक्ट से भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा बट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा उस पर. यूनियन से भी कर सकते होंगे यार. आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट वी कैन ट्राई इट. It depends. We can do that, but again, why to complicate your queries when you can simply run it through a simple process, right? So do not. You're not supposed to complicate it. Why to complicate it? हाँ, नेस्टेड क्वेरी यूजिंग यूनियन से हम कर सकते हैं. वी कैन थिंक ऑफ इट. डेफिनेटली कर सकते होंगे. वी हैव टू थिंक फॉर द वे ऑफ इट, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट राइट नाउ. मे बी वी कैन ट्राई डूइंग दैट. बट अगेन यार कॉम्प्लिकेट नहीं करो क्वेरीज को ना, कोई पॉइंट नहीं है. मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द क्वेरीज. And again, as I've said, no way is wrong. So no way of writing the code is wrong. So when I'm writing this query, it does not mean that this is the only way we can do this, right? It does not mean like that. So you can still do it in a number of ways, and no way is wrong. The only thing is like if you're able to get the answer, it's fine. But again, the question comes when it comes to optimization, right? So when you're running it on the production environment, when you're business, right? So in that case, that is where we talk about whether the query is optimized or not. So that's where we check that, nothing else. ठीक है guys, quickly take 10-15 minutes of break. Do join on the other side 11:15, same channel, right? So we have another live session coming up, so we're going to do some nested query example there. ठीक है, चलो let's quickly take 10 minutes का break and join there. Thank you so much guys.